This call is now being recorded. Good evening, everyone. Am I audible to you all? Good evening, sir. Yes. Okay, thank you. Thank you for confirmation. Just give me a minute and then we'll just start the session. Let's wait for a minute or two for the other people to join. I think it is time to start the session. Uh, I welcome everyone. और आज आपको पता है कि मतलब एंशियंट इंडिया थोड़ा उसमें आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा एक पार्ट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे.
और जब आप PYQs आपने देखे होंगे तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट section of the ancient history, right? Gupta Empire, the Harshvardhan, the time of Harshvardhan, the Sangam era, है ना? और उससे रिलेटेड लिटरेरी टेक्स्ट जो हमको मिलते हैं, पोएट्स एसोसिएटेड, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ दोस टाइम, है ना? ये सब बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं. पिछले साल भी आपने देखा होगा प्ले राइट्स के बारे में पूछा गया था. प्ले राइट्स इज समथिंग विच इज वेरी रेगुलरली आस्क्ड. प्ले राइट्स एंड देयर वर्क, देयर क्रिएशंस, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा तो आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू रीड मोर अबाउट. ओके, शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संगम एरा. संगम एरा वैसे मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ा नहीं है, आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा इसको पढ़ने में. इट इज अ वेरी फ्रूटफुल थिंग यू कैन डू, है ना? थोड़ा अच्छा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है और हर टाइम मतलब इट इज हाई चांसेस दैट इट विल बी आस्क्ड. First question is, of the second Sangam, it is the only surviving work. It is a work on Tamil grammar, but it also provides information on the political and socio-economic conditions of the Sangam period. Which work is being described in the above paragraph? So, give me your answers. आपको क्या लगता है? You can just write your answers in the text comment section. Okay, great. तो आपको ये पता होगा कि संगम्स हुए थे, है ना? There were 3 संगम्स, और जैसे आपने पढ़ा होगा. और जो the first Sangam which took place was in Madurai, the second was in Kapadapuram, and third was in again in Madurai, है ना? तो फर्स्ट संगम का तो कोई टेक्स्ट बाकी नहीं है ना, नो लिटरेरी वर्क ऑफ दैट टाइम इज अवेलेबल टू अस. पर सेकंड संगम का सिर्फ एक ही टेक्स्ट बचा है जो है तोलकपियम, है ना? तो मोस्ट ऑफ यू आर राइट हियर. तोलकपियम इज द आंसर इन दिस थिंग. सेकंड संगम held at Kapadapuram and only one text remains, the Tolkappiyam. And it is imperative कि आप सारे के सारे जो भी important text है during the Sangam era, है ना, चाहे शिल्पाधिकरण हो, है ना, it was written by Ilango Adigal. जब the other text है ना, तो वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए. जैसे थिरुकुरल है जो थिरुवल्लुवर ने लिखी थी. तो these are 2-3 texts that are very important, और आपको बाकी भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए. इसका आंसर है the two Tolkappiyam. Most of you were right. Let's move on to the next question. गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए. तो इसमें वैसे ये जो हेडिंग है वो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, है ना? आप ये वाले जो बस बैच करने की कोशिश करो जहां पे आपको याद आ रहा है. भुक्ति, संधि विग्रहिका, महादंडनायक एंड दंडपाशिका. And the second column says Minister of Peace and War, Uparik, Minister of Justice, Chief of Police Department. तो आप बताइए कि what is the answer of this question. ये भी लिखिए कि कौन से सही मैच भी हैं. Only 2, okay. 3 and 4. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आपको पता होगा कि जो गुप्ता एम्पायर है उसका सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेट मतलब जो प्रोविंसेस में जो वो बांटा जाता था उसको बोलते थे भुक्ति. तो भुक्ति वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ मतलब भुक्ति वाज नॉट रिलेटेड टू द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर. भुक्ति का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो उपारिक बोलते थे उसको, है ना? तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भुक्ति एंड भुक्ति के नीचे विषयास में डिवाइड होता था. भुक्ति के हेड होते थे उपारिक एंड विषयास के थे विषयपति. ठीक है. सेकंड इज संधि विग्रहिका. तो व्हाट वाज संधि विग्रहिका? इट वाज रिलेटेड टू मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, है ना? दे डिसाइडेड अपॉन कि मतलब ट्रीटीज जो भी अलायंसेस वगैरह. तो दिस वाज संधि विग्रहिका. इसका 1 है, तो इन्होंने मतलब एक्सचेंज कर दिया है, भुक्ति को मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर कर दिया है. तो दीज 2 ऑप्शंस आर एक्सचेंज, और ये यूपीएससी काफी बार करता है ना. तो 2023 के काफी क्वेश्चंस में ऐसे एक्सचेंज किया हुआ था. थर्ड इज महादंड नायक. थोड़ा आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि दो दंड का नायक होता है, गिव्स दंड.
तो that's someone called a judicial officer जो दंड देता है या military officer. तो third is correctly matched. और जो last है वो है दंड पाशिका. तो it is also correctly matched. It is the chief of police department in a district level. Okay. So 3 and 4 are correctly matched and most of you have given the right answer here. And again I will tell कि आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और जो भी मिनिस्टर्स के नाम अमात्य जिनको बोलते थे और उन रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो आप अच्छे से याद करिए गुप्ता पीरियड के टाइम का, है ना, बिकॉज इट वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ban Bhatt informs us that Harsha's army is made up of troops supplied by Samantas. This fact is confirmed by बान भट्ट ने हमको बताया है, but it is also confirmed by which of the following? Huensang's Siyuki, Harsha's Masasi copper plate inscription, Pulkeshin II's Aihol inscription, or Harsha's Ratnavali. Okay, A1, A1, 3, 3. Okay. जो वन लिख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वन इज नॉट द आंसर. आई थिंक पुलकेशिन फॉट विद द हर्षा's आर्मी, है ना, ही डिफीटेड हर्षा. तो इट इज रिटन इन द पुलकेशिन टू आईहोल इंस्क्रिप्शन. जो ह्वेनसांग्स का सीयू की था वाज मोस्टली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, है ना. उसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और उस टाइम के बुद्धिस्ट फिलोसफीज के बारे में ज्यादा मेंशन्ड है. एंड हर्षा's रत्नावली इज अ प्ले रिटन बाय हर्षा, और उसमें ज्यादा चांसेस भी नहीं है कि उससे लिखा होगा कि उसकी खुद की आर्मी कैसे होगी. इट्स जस्ट अ प्ले रिटन बाय हिम. The answer is 3, Pulkeshin II's Aihol inscription, है ना. And it is a very important inscription. थोड़ा और भी पढ़ लेना आप इसके बारे में कि और क्या क्या mentioned है इसमें. The answer is 3. Moving on to the next question. Again Gupta administration पे question है. Consider the following statements. Important administrative positions were passed down through the generations. During the Gupta period, a republic was prevailing form of government. The empire was divided into provinces which were known as Vishyas. बताइए इसका आंसर. Which one of the following are correct? One. A. Also write की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना. ओके, देखते हैं. इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस और पास डाउन थ्रू जनरेशन. उस टाइम मोनार्की थी जो हेरिडिटरी थी. उसके जो मिनिस्टर के पोस्ट्स भी थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी, वो भी हेरिडिटरी रहेगा. कोई ऐसा सिलेक्शन का प्रोग्राम नहीं था उनका. मोस्ट ऑफ इट वाज पास डाउन थ्रू द जनरेशन. तो फर्स्ट इज राइट. अब देखना, तो बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी थी गुप्ता पीरियड की, है ना. तो उसी हिसाब से देखना. इट वाज नॉट रिपब्लिक, इट वाज मोनार्की. आप सबको पता होगा गुप्ता किंग्स के बारे में. द किंग वाज नॉट इलेक्टेड, ही वाज, the position was hereditary. So second is the wrong statement. The empire was divided into provinces. और हमने ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसमें देखा था कि provinces were not called Vishyas. The provinces were called Bhuktis, है ना. और भुक्ति को फर्दर डिवाइड करते हैं हम विषय में. तो this is a wrong answer. The answer is only 1. Okay, only the first statement is correct. Let's move on to the next. Consider the following statements about Harshvardhan. Harsha brought peace and tranquility as he brought almost the whole of North India under his hegemony. In the post-Gupta period, trade and commerce witnessed further decline, which had started during Gupta period. तो इसका आपको देना है statement 1 and 2, which one is correct, and if the both statement are correct, whether statement 2 is does explain the statement 1. तो आप बताइए. First answer. B, D, both are correct. Okay. And does not explain. ठीक है. Harsha brought peace and tranquility as he brought most of the whole of the North India.
under his hegemony. ये सही है, almost all of the North India came under his hegemony, और जिसकी वजह से पीस का टाइम माना जाता है. तो गुप्ता के बाद थोड़ा जो टबल्टस टाइम था वो थोड़ा हर्ष के टाइम पे पीस ज्यादा हुआ था उस टाइम पे. वो लेस फाइट्स इन फाइट्स क्योंकि मोस्टली हर्षा ने पावर कैप्चर कर ली थी. Second statement is post-Gupta period, trade and commerce witnessed further decline, which had started during the Gupta period. Gupta was a very मतलब strong empire. तो उनके टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश अ लॉट ड्यूरिंग द गोल्डन एरा विच इज वेल नोन, और उसके बाद कम हुआ था ट्रेड एंड कॉमर्स. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट नाउ द थर्ड थिंग इज कि हमको देखना है कि डज द सेकंड स्टेटमेंट जस्टिफाइज द फर्स्ट स्टेटमेंट. ट्रेड एंड कॉमर्स के डिक्लाइन होने की वजह से was it possible for Harsha to bring peace and tranquility? Both are not, I think, related. ट्रेड और कॉमर्स कम होने की वजह से जरूरी नहीं है कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी लाया हो हर्ष, है ना. तो बहुत अनरिलेटेड स्टेटमेंट है. आप डायरेक्टली भी ये सोच सकते हो कि दीज आर द सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Then we'll just move on to the next question. Self understood है वैसे ये mostly. Let's just move on then. The sixth question, Harsha. Again, Harsha is very important. तो उस पर पूछा गया है कि बलि किसको कहा जाता है. तो there were various types of taxes. तो उसमें से बलि किसको कहा जाता है. तो a type of revenue that is spent on expenditure of the king, a charter of land grants to the granting officer, and offering of animal sacrifice to the king by his subjects. Type of tax that appears to be a ferry tax. ये आई थिंक PYQ में भी पूछा जा चुका है इसको, तो यू कैन गिव योर आंसर्स. वेरी फैक्चुअल. इन टाइप्स पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए. PYQ में भी आया था. इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट अपीयर्स टू बी अ फेरी टैक्स, है ना. तो ये फेरी टैक्स है. maybe it was mentioned by Muensang or Banbhat, but it is a type of ferry tax. तो और भी दो तरीके के होते हैं. भाग होता है जिसको लैंड टैक्स बोलते हैं, और एक हिरण्य होता है. हिरण्य टैक्स इज पेड इन कैश. Bali appears to be a ferry tax. So it is a factual question. 4 is the correct answer. Let's move on. Which one of the following statements about Sangam literature in ancient India is correct? तो Sangam literature का question है. Sangam poems are devoid of any reference to material culture. The social classification of Varna was known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethic. Sangam literature refers to magical forces as irrational. Give me your answers. Okay, B. एक लॉजिकल वे में भी हम देख सकते हैं कि करेक्ट पूछा है, तो देखते हैं. फर्स्ट, डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. मटेरियल कल्चर क्या होता है? हमारा लैंड हो गया, हम पॉटरी है वो भी मटेरियल कल्चर में आता है, हम क्या खाते हैं वो भी मटेरियल कल्चर में आता है. तो एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर इज इनकरेक्ट. सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स. इट इज वेरी हार्ड टू रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट, है ना. हम ऐसा नहीं बोल सकते इट वाज नॉट नोन टू संगम पोएट्स. इट्स अ वेरी, it will be a very extreme statement. It can be known to Sangam poets. Generally हमको लग रहा है कि हो सकता है. फिर भी आगे देख लेते हैं. Have no reference to warrior ethic. Very extreme statement. संगम poems बहुत ज्यादा हैं, है ना. और warrior ethics पे तो सभी बात करते ही हैं. And संगम literature refers to magical forces as irrational. तो आप थोड़ा आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि ancient history की बात है. Not a lot of scientific temperament had developed during that time, or it would be very extreme to say that Sangam literature had referred to magical forces as irrational. बाकी आपको बता ही दिया कि it is very hard to refute the second statement. It is a correct statement. ऐसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं. if you have थोड़ा भी आपको अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो you can just apply this logic to get your right answer. 8th क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to ancient South India, Korkai, Pumpuhar and Muchiri were well known as capital cities, ports, centers of iron and steel making, shrines of Jain Tirthankar. Give me your answers. Two ports.
ये भी वैसे पीवाईक्यूज में पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा गया है। तो पोर्ट सिटीज है ना, जैसे मुजिरिस है, ये मुचिरी यहाँ पे मेंशन्ड है। मुजिरिस को ज्यादा वेल नोन है। एंड कोरकाई इज इन तमिलनाडु, और पुम्पुहार इज ऑल्सो इन तमिलनाडु, एंड मुजिरिस इज इन केरला। तो it is a PYQ, and the answer is ports. Okay, and you should be very well versed with this कि कौन से cotton producing centers थे, कौन से ports थे, कौन से industrial hubs थे संगम एरा के टाइम पे एंशियंट इंडिया में। तो यू शुड नो दीज थिंग्स। और आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि एक इंडिया का मैप लेके उनको थोड़ा मैप आउट भी कर सकते हो, क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ये जो तीनों चीजें बताई है मैंने, यू कैन जस्ट मैप देम आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज, और द अदर थिंग, मतलब इंडस्ट्रियल हब्स, वो सबके बारे में आप एक मैप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना, सो दैट यू रिमेंबर देम बेटर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. The three early kingdoms of South India, Cher, Chol, and Pandya, are mentioned in the Ashokan inscription. The kingdoms of their own emblems like Kaap of the Pandyas, tiger of the Chol, and the bow of the Cheras. The kingdom were famous for their chief crops like pepper in Chera country, the paddy in Chol and Pandya countries. So, give me your answers. How many statements? Okay. Are correct. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। These three kingdoms are mentioned in Ashokan inscription. वैसे भी अशोकन आपको exactly नहीं भी पता है तो you cannot, it is hard to refute this statement, है ना। आप ऐसे एक बार करके देख लो कि you try to refute this statement। इतने सारे अशोकन इंस्क्रिप्शन से हो सकता है किसी न किसी में मेंशन हो। इट इज वेरी हार्ड टू रिफ्यूट इट, सो यू कंसीडर इज करेक्ट। सेकंड है कि उनका एम्बलम भी होता था। चूल का एम्बलम तो सबको याद ही होगा, टाइगर, एंड कार्प एंड बो आर द एम्बलम्स ऑफ पांड्या एंड चेरा। सेकंड इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड में ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो चेरा है मोस्टली वाज रिलेटेड टू द मॉडर्न डे केरला, है ना। तो वहाँ पे पेपर तो वैसे ही हिस्टोरिकल उगाया जाता है। तो द while the more तमिलनाडु ओरिएंटेड किंगडम्स चोल एंड पांड्या, वहाँ पे पैडी ज्यादा होता था, धान की खेती ज्यादा होती थी वहाँ पे। Want to the next question? तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। During the reign of which of the following Pallavs Huaysang visited Pallav capital Mahindwarman 1, 2, Narasimhavarman 2 and 1? कौन सा है बताइए आप। Okay. Pallav, Chol and Pandya are all four great kingdoms because जो मोर का आंसर है नरसिंह वर्मन 1, है ना। दिस इज वेरी फैक्चुअल, दिक्कत की बात नहीं है। हुइनसांग ने साउथ इंडिया किसके में विजिट किया है, वैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट में दिया होता है, बट आंसर इज नरसिंह वर्मन 1। ही वाज सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन 1, है ना। ही वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन 1, and Huinsang traveled to Pallav during his time to Kanchi. Okay. Move on to the next question. Consider the following statements related to administration of Pallavas. The Pallavas did not had a well-known, well-organized administrative system. The Pallav state was divided into kotams. The kotam was administered by the king. The king was at the center of administration, in which he was assisted by his able ministers. So, how many of the statements are correct? Give me your answers. 2, B, okay. डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो
पहला तो एक चौथा वाला देख लेते हैं, was at the center of administration and was assisted by able minister. This is true for any monarchy, है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट जनरली करेक्ट ही हम मान लेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि पल्लव डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगता है भी, अगर monarchy तो स्ट्रक्चर होगा तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगी. Did not have a well organized. It had a well organized administrative system. That why it was a powerful kingdom of South India. So one is incorrect, है ना? The Pallab state was divided into. तो ये आपको पता होना चाहिए. State was factual, and the कोटम was administered by king. तो आप ये भी देख सकते हो कि पूरा स्टेट को आपने डिवाइड कर दिया कोटम्स में, तो किंग डायरेक्टली उनको नहीं करेगा. किंग विल पॉइंट someone on his behalf. फ्यूडलिज्म आएगा, है ना? तो रीजनल रूलर्स will rule कोटम्स. तो the third statement is incorrect. Only two statements are correct. Okay, 2 and 4. ठीक है. Let's move on to the next question. Consider the following statements related to poison of women during Gupta period. Read it wrong. Position of women during Gupta period. Women were permitted to study religious texts such as Quran. The subjugation of women to men was subjugation of women by men was highly institutionalized. The practice of Swayamvar was not abandoned, and Manusmriti did not advocate for early marriage for girls. अगेन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि गुप्ता वाज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो आप आंसर दीजिए उसके हिसाब से थोड़ा सोच के. 2 is correct. काफी लोग ये लिख रहे हैं. ये 2. ओके. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. वुमेन वर परमिटेड टू स्टडी रिलीजियस टेक्स्ट सच एज कुरान. तो उस टाइम पे आप देखना कि काफी रिजिड हो गया था हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम था. तो वुमेन के जो पोजीशंस थी वो डिटेरियोरेट हो गई थी काफी, है ना? तो दे वर नॉट अलाउड टू रीड सच टेक्स्ट सच एज कुरान. सेकंड इज सब्जुगेशन ऑफ वुमेन वाज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. तो ये सही है. सब्जुगेशन ऑफ वुमेन हुआ था, उनकी पोजीशन डिटेरियोरेट हो गई थी. तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. First was wrong. The third is the practice of Swayamvar was not abandoned, and Manusmriti did not advocate for early marriage. Manusmriti is again a very traditionalist type of text. उसमें they have advocated for early marriage of girls. तो अगर आपको second पता होगा तो भी आप इसको निकाल सकते हो इसका आंसर. And the practice of Swayamvar was abandoned during this time. 3 is also not correct. Only 1 is the answer, है ना? The statement 2 is correct only. Only 1 is the answer. Let's move on to the next question. Which one of the following explains the practice of Vatta Kirutal as mentioned in Sangam poems? Kings employing the women bodyguards, learned person assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters, young girls keeping watch over agricultural fields and driving away birds, a king defeated in battle committing ritual suicide by starving himself to death. So this is a PYQ, है ना? ये PYQ है. It has been asked before as it is. तो इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग, तो यू नीड टू नो. तो इसमें संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है वत्त किरुतल, एंड इट रिलेट्स टू द रिचुअल्स सुसाइड कमिटेड बाय अ डिफीटेड किंग. ठीक है. तो कोई हार जाता था तो जैसे जापान में नहीं हो तो सिप्पुकु बोलते हैं, तो उसी तरह इंडिया में वत्त किरुतल, इट इज अ रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग देमसेल्व्स. जापान में तो ब्लेड से अपने कटाना से खुद को मार देते हैं, बट हियर इट इज बाय स्टार्विंग देमसेल्व्स. ओके. Fourth is the correct answer. It is a PYQ. You should know this. Let's move on to the second last question. With reference to scholars and literatures of ancient India, consider the following statements. Dhurjati is associated with Kanishk. Bhavbhuti is associated with Harshvardhan.
Harisen is associated with Samudragupta. So which one of the following are correct? आप बताइए कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? 1, 2 and 3. थर्ड स्टेटमेंट. ओके, ठीक है. डिस्कस कर लेते पहले. दुर्जति इज एसोसिएटेड विद कनिष्क. तो यू शुड नो दैट, मतलब वैसे मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि जो प्ले राइट्स हैं और उनके किस कौन से पेटर्न्स थे और किस कंटेम्प्रेरी के टाइम पे थे, उनके वर्क्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हर साल ही पूछे जाते हैं. पिछले साल भी पूछे गए थे आई थिंक 2 क्वेश्चंस ऑन दिस. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच यू शुड नो. तो हरिसेन first, he was associated with Samudragupta, this you should know. So 3 is the correct statement. Durjati was not during Kanishk, he was during the time of King Krishnadevaraya of Vijayanagar Empire. So पहला गलत है. And Bhavbhuti is not associated with Harshvardhan, he is associated with King Yashovarman of Kannauj, है ना. तो भावभूति पिछले मतलब PYQs में भी आ चुका है. उन्होंने उत्तर रामचरित लिखी थी और महावीर चरित भी उन्होंने लिखी थी. भावभूति इज इंपॉर्टेंट प्लेराइट. 1 and 2 are incorrect, 3 is correct, only 1 is the answer. Move on to the last question. Meghdoot of Kalidas was first translated in English by Charles Wilkins. Kumar Sambhav contains reference to Sati system. The literature in Gupta period was written in Sanskrit. So which one of the following are correct? Gupta literature से question आया. Give me your answers. Two and 3. Okay. Meghdoot of Kalidas was first translated by in English by Charles Wilkins. I think ये गलत है. Horace Wilson ने I think इसको किया था first translate मेघदूत को. It is a bit tough क्योंकि mostly नहीं पता होता क्योंकि हर एक चीज आप याद नहीं रखोगे. But I think Charles Wilkins ने गीता को translate किया था and मेघदूत was translated by Horace Wilson. William Jones ने नहीं किया था I think. It was by Horace Wilson. You can just Google it once. Second is Kumar Sambhavam contains reference to Sati system. Kumar Sambhav नाम वैसे सबको पता होगा कि ये कार्तिकेय के बारे में स्टोरी है. कुमार संभव तो इट इज रिलेटेड टू शिव एंड पार्वती, और जहाँ भी शिव का नाम आएगा वो हो सकता है सती का भी नाम आए. तो सती सिस्टम रेफरेंसेस टू सती सिस्टम इज देयर. सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड द लिटरेचर इन गुप्ता पीरियड वाज रिटन इन संस्कृत. तो दिस इज अ जनरल. उन्होंने ये नहीं बोला कि इट वाज रिटन ओनली इन संस्कृत, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता. वो संस्कृत में तो लिखा ही गया था, है ना. कुमार संभव, मेघदूत, मालविक अग्निमित्र. हेमन विल्सन. अच्छा, हॉरिस विल्सन, हेमन विल्सन, ऐसे कुछ नाम है. तो फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना. ओनली 2 आर करेक्ट, कुमार संभव एंड द थर्ड स्टेटमेंट. I think this was the last question. We will take the doubts now. You can just raise your hands. हाँ शशि, आप पूछना चाहते हो कुछ? Your hand is raised. नहीं पूछा, किसी और का कोई डाउट है? You can just raise your hands. गुप्ता एम्पायर के अलावा और कितने किंगडम्स ऐसे हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्रॉपर्ली देख के जाना चाहिए? क्या आप गुप्ता के अलावा ऐसे पूछ रहे हो आप? हाँ, जैसे कृष्णदेव राय के टाइम पे थे. हाँ. तो ऐसे नोटेबल 5-6 अगर आप बता सको, लिस्ट आउट कर सको. हाँ, जो भी पावरफुल किंगडम्स थे ना, जैसे मौर्य के टाइम हो गया, गुप्ता के टाइम हो गया, या उसके बाद आप चोल एम्पायर भी देख लो. साउथ इंडिया में चोल वर वेरी
पावरफुल, विजयनगर एम्पायर वाज वेरी पावरफुल, मिडिवल इंडिया में सल्तनत, मुगल पीरियड, इन सब के आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अच्छे से देख के जाओ, है ना. All the powerful dynasties that you come across. So these are the 5-6 that you should see. ठीक है सर. Okay. हाँ संजय, पूछिए आप. सर पल्लवास के लिए कोई सोर्स अगर आप बता सकते तो. पल्लवास के लिए हाँ मतलब क्योंकि मैं जब पल्लवास को का अच्छे से दिया हुआ नहीं हमारी नोट्स में दिया हुआ है. अच्छा, मतलब तो स्पेसिफिक. हमारे नोट्स में मतलब अभी जो ये दिए वो नोट्स तो नहीं पढ़ाना है जो हमको कोचिंग में नोट्स मिले थे उसमें उसकी बात है. अच्छा तो अच्छा. उससे थोड़ा वैसे आपको कहीं भी कोई भी इशू आ रहा हो ना, तो यू कैन जस्ट गूगल, और बहुत सारे जो जैसे दृष्टि IAS है उसके बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, इनसाइट्स के रहते हैं, जहाँ पे वो पूरा डिटेल में बता के रखते हैं. तो जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है आपके नोट्स में थोड़ी कमी है, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गूगल, डोंट नीड टू रेफर टू कंप्लीट टेक्स्ट. जैसे मैं बोल तो सकता हूँ कि आप पूनम दलाल पांडे बुक आती है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पे, वो आप बट वो आपको खरीदनी पड़ेगी फिर. तो उसके लिए आप स्पेशली कोई और बुक मत खरीदिए, यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट गुड आर्टिकल्स फ्रॉम दृष्टि और इनसाइट्स, तो यू कैन जस्ट रीड इट ऑनलाइन. ठीक है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूज द हेल्प ऑफ चैट GPT और जेमिनी, है ना, तो वो भी अच्छे से आपको हेल्प कर सकते yes, sir, thank you. हैं. ओके, यू वेलकम. एनीवन एल्स? आयुषी, हाँ पूछिए अपना क्वेश्चन. Sir, is there any approach to be followed to cover the works and the authors, because the list is very extensive? So can you suggest something for that? अच्छा, वर्क्स एंड ऑथर्स. तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको PYQs ही है, सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए. उसके बाद कहते हैं, जो मैंने अभी 4-5 किंगडम्स के नाम लिए, जो दीज आर वेरी पावरफुल, तो उनके टाइम के जो ऑथर्स है ना, उनके टाइम का सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, तो ऑथर्स दैट दे वर पेट्रनाइज्ड, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो भी आए थे उनके वर्क्स सबके, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा आप जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है ना, जो जिसको भी आप रेफर कर रहे हैं, तो उसमें भी जो मेंशन्ड है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए. और यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ जेमिनी कि जो वो आपको आप बता दो कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से ऑथर्स हैं, और वो टेबल फॉर्मेट में ही आपको दे देगा उनके वर्क्स और ऑथर्स के नाम. डायरेक्ट यू जस्ट टेल इट टू इट, और वो प्रॉम्प्ट दे देना, आप उसको, वो निकाल के दे देगा आपको. बाकी PYQs में जितने भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उनको तो आप अच्छे से पढ़ के जाना है ना. Okay, sir. Thank you. यू आर वेलकम. शशि, आपका हैंड अभी भी रेज है. कोई क्वेश्चन है आपका? सॉल्यूशन शीट मांगिए. ओके, आई विल पुट इट इन द ग्रुप. जो PSP का ग्रुप है उसमें मैं सॉल्यूशन शीट डाल दूंगा. और आयुषी, अच्छा आपका तो मैंने जवाब दे ही दिया है. ओके, एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स. ओके, आई थिंक किसी को नहीं पूछना है, तो we'll just then end the session. Okay, or I hope this session was helpful for you all. Thank you for joining the session. Best of luck for your exam and preparation. Thank you, sir. Good night. You're welcome. You're welcome. Thank Good you, sir. night. You're welcome.